And it goes a little something like Hey babes, welcome back to my channel. Today in this video I'm going to show you how you can create this simple yet elegant eye look using blush, bronzer and shadows in just 5 minutes. But इसकी सारी details description box पे mentioned है. So now without any further ado, let's get started. At first I'm applying Elegant Pro Concealer as primer. Now I'm blending it with a big blending brush. अब मैं ये Maybelline Color Show Blush inner corner crease में अप्लाई करूँगी. You can apply any color blush of your choice. अब मैं ये bronzer अप्लाई करूँगी on outer corner crease. This one is from NYX. ग्रेजुअली मैं ऐसे इनर कॉर्नर ब्लश के साथ भी थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ केयरफुली, ताकि दोनों कलर मिक्स ना हो, सिर्फ ब्लेंडेड दिखे. अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा और ब्रॉन्जर सिर्फ आउटर कॉर्नर पे टू डिफाइन इट. नाउ टेक एन एंगल ब्रश टू अप्लाई आई शेडो एज लाइनर. अभी मैं केयरफुली एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यूजिंग ए ब्लैक आई शेडो. अभी मैं एक ब्रश लूँगी और शैडो को क्रीज में ब्लेंड करूँगी. ब्लेंड इट स्लोली टुवर्ड्स आउटर कॉर्नर. मैं बाकी के लाइन को भी ब्लेंड कर रही हूँ टू अचीव ए लाइट स्मूथ स्मोकी लुक. अब मैं ये कलर अप्लाई करूँगी. थोड़ा सा ही अप्लाई करना है, इसीलिए मैं इसे एंगल ब्रश से ही अप्लाई कर रही हूँ. And now it's time to blend it into crease. Now it's time to remove the tape. अब मैं edges को थोड़ा blend करूँगी to smooth it out. Applying concealer on lower lash line and blending it. अब मैं एक matte brown shade lower lash line पे अप्लाई कर रही हूँ सेम Swiss Beauty palette में से. Apply highlighter on brow bone and inner corner. Now after applying mascara, the look is done. So guys, that's it. This is the final look. I hope you all will like this tutorial. If you like it, give this video a thumbs up and please subscribe to my channel. Also hit the notification bell to get notifications of my future uploads. I will see you soon in my next one. Till then, take care of yourself, keep smiling. Bye.